Hi everyone. In this video, we are going to create an Azure virtual machine from a snapshot that involves several steps. Snapshot means there is already a virtual machine configured and maybe a lot of applications running and software installed on it. There is a requirement to create a new replica machine with the same configuration, same RAM and processor. This activity will save a lot of time in comparison and creating a fresh virtual machine and do the configuration. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एज़ोर पोर्टल पे लॉग करूंगी। लेट्स ओपन portal.azure.com। मैंने पहले ही अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है, इसलिए यहाँ क्रेडेंशियल नहीं मांगेगा। लेकिन जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो यहाँ क्रेडेंशियल मांगेगा। सो यू हैव टू लॉग इन विद योर एज़ोर क्रेडेंशियल। सो हियर वी आर इन एज़ोर पोर्टल। This is my account, so I have lot of resources as I have VMs, IPs and disk. तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे मेरे पास एक VM है MSLTUAT, मुझे इसकी रेप्लिका बनानी है। मुझे जो VM बनाना है उसका नाम MSLTDEV होगा, वह MSLTUAT का रेप्लिका होगी और सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और अन्य सभी कॉन्फ़िगरेशन इस नए VM में कॉपी हो जाएंगे। For this, first step is to go in search bar and write snapshot. So, all the snapshot that you have created till date will get listed over here. Now, next step is to create a new snapshot of our MSL TUAT virtual machine. Image of any VM is also known as snapshot. Now, click on the Create button. Here, we have to fill some details. First step is to select subscription. So, आपके पास जो कुछ भी सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर आप चुन सकते हैं। In second step, you have to select resource group. So, in Azure, every resource is linked with any group. Like रिसोर्स ग्रुप में मेरे पास ऑलरेडी MSLT ग्रुप से नाम से है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। यू कैन सिलेक्ट whatever you have. Next one is to provide a full name to the image or a snapshot that you are going to create. So, whatever name you want to provide, you can. जैसे कि मैंने यहाँ पे image UAT प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रीजन. दिस इज बेसिकली जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्चुअल मशीन दैट विल गेट क्रिएटेड. सो व्हाटएवर रीजन यू वांट यू कैन सिलेक्ट. नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्नैपशॉट टाइप. यहाँ आपको फुल सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा सोर्स टाइप, जहाँ पे आप डिस्क सिलेक्ट करोगे. Here, basically, we copy the disk on which operating system is installed of source VM. So, we will select disk here. For source subscription, we will leave it as it is because we wanted to pay for it when it will be in use. Next step is to select source disk. यहाँ आपको पता लगाना होगा कि सोर्स VM में कौन से डिस्क उपयोग में है. MSL मेरा मतलब है MSLTUAT वर्चुअल मशीन में कौन से डिस्क यूज में है. Here I am using disk MSLTPROD OS disk 1. So I will select it. Next one is to select storage type. That we have to select standard HDD. And then click on the review, then create. It will take couple of seconds to showcase the information that you have selected. Just verify the details and click on create button. Now it is taking a few seconds to create the snapshot, so we have to wait a moment. And here we go. Now our snapshot is ready. Click on the Go to Resource.
अब हमारा स्नैपशॉट तैयार है और हमें क्रिएट करना होगा एक डिस्क फ्रॉम दिस स्नैपशॉट। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा क्रिएट डिस्क। सो हियर वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डिस्क फ्रॉम दैट क्रिएटेड स्नैपशॉट। और फिर उस बनाई गई डिस्क में से हमें वर्चुअल मशीन बनानी होगी। फिर हमें एक नई डिस्क को नाम देना होगा। इसलिए मैं इसका नाम MSLT देव डिस्क दूंगी। And now click on review then create. It will take a few seconds to validate the result. Review the details and click on create. In couple of seconds, your new disk will get created. Now, here we go. Our disk, or you can say managed disk, is ready. Now, next step is to create VM from this disk. So, click on Go to Resources and then click on Create VM. Here, you can provide name of your new virtual machine. As I am providing MSLTDEV, you can check other details. As image is already will get selected, means this machine is getting created from an image or a snapshot. So our just created this is already selected over here. Size you can update. It is basically for RAM and processing, but I am leaving as it is. Select license type as Windows Server. Then click on Review plus Create. Just verify your details and click on Create. It will take couple of minutes to configure and deploy your server. Just wait for a few minutes. Our new virtual machine deployment is in progress. And here we go. The deployment is completed and our VM is ready. Now click on Go to Resource. यह हमारी नई मशीन है जिसका नाम है MSLTDEV. Now you can check the details. It has a new IP address and you can copy that. और हाँ, MSTSC करने के लिए I mean to access this machine by remote, that user of the source virtual machine will exist here. I mean मैं अपने पुराने यूजर क्रेडेंशियल्स का यूज कर सकती हूँ. So now I will open MSTSC, means remote desktop connection. Paste IP address and click on connect. Provide user credentials. And click on OK. Click on yes. Here we go. Our machine is ready. This is replica of source machine. So all the things of old machine will be here. Check your application. Then check your application hosted on IIS. We can check as IIS is already installed. This is all about.
Thanks for watching.